नमस्कार दोस्तों, आर के डिजिटल स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टपल्स। ओके, व्हाट इज टपल? Tuple in Python is an order immutable collection of elements. Unlike list, tuple cannot be modified after creations. Now we'll see how to create tuple. Tuple are created using parentheses, and tuple can contain same data type or different data type. Okay. We used to create list using a square bracket. If you see in the last lecture. Okay, let's see some example. तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई टपल इक्वल टू parenthesis 1 2 3 4 5 6 and 7. Now I will just print this one. Let's see the output. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, second statement is the and tuple can contain different data type also. Okay, now I'm adding some different data type. Hello Rakesh. And the second statement is how are you? Okay. Now we'll run this code. See, this is the integer, all are integer, and now I added the string values. Okay. अब हम देखते हैं हाउ टू एक्सेस द टपल एलिमेंट. सपोज आपने डेटा इंसर्ट कर दिया टपल में, देन हाउ टू फेच द टपल एलिमेंट टू डू द ट्रांजेक्शन एट द रन टाइम, राइट? So we can access the element using indexing. I will just print some values. Print my tuple, and then indexing start from the 0. Okay, print and then my tuple, index start from 0, then I will do 3. Okay, print my tuple, and then it's 5. Okay, so now 1 from 1 will store on the 0 index. Okay, so 0 1 2 3. Okay, so 1 4 3 4 5. So 1 3 or 5, it will give the 1 3 or 5 is the output. 1 4 or 5. Okay, so is on the 3 place 1 0 1 2 and 3. Okay, 1 4 or 6 is okay. Okay, now we will see what is slicing. स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास टपल है, टपल में थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट इफ यू वांट टू फेच ओनली द पर्सन ऑफ द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स, only 100 to 500 or 500 to 600, so like that, if you want to fetch that element, that's some portion of that element, then that time you can use the slicing. Now we will see the some example of slicing. So I am creating one list, numbers equal to tuple. I am just creating, sorry, 10 20 30 40 50 60 and 70. Okay, suppose you want from element from index 1 to 3. Okay, element from index 1 to 3, then what is the syntax? हम लोगों ने लिस्ट में देखा था ये सारे सिंटेक्स. The same syntax is going to be applicable. Print numbers, okay, square bracket 1
and then last is n minus 1, then it's going to be n plus 1. अगर थ्री तक लेना मुझे तो 3 + 1 करना पड़ेगा, राइट, 4. n minus 1 दैट मीन्स 4 मेंशन किया मतलब उसके पहले वाला एक लेगा, राइट. लेट्स सी द आउटपुट 20 30 40. तो 0 1 2 3 1 2 3 20 30 40. ओके. सेकेंड सिंटेक्स हम देखते हैं. इसमें क्या फर्स्ट 3 एलिमेंट चाहिए आपको, फर्स्ट 3 एलिमेंट. ओके. इसके लिए है प्रिंट नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलम और 3. नाउ दिस विल गिव यू द first 3 element. Let's see the example 10 20 and 30. Now other one more scenario we will just see. Element from index 2 onwards. So we want all the element from the tuple after the 2 onwards to including 2 also. Okay. Print numbers, okay, start and end. Let's say the example. Okay, 0 is the 10, 1 is the 20 and the 2 is the 30. After 30 every element is fixed. Okay, now I will see one last example. Every second element we want to fetch, every third element. Okay, so how we can do the print, sorry, print numbers or column 2 3. Let's see the output 10 40 and 30. We cannot update or modify the tuple because tuple is immutable. Once you create the object of tuple, you cannot be edit or update. So we don't have any edit or update operation in tuple like list. You cannot modify or remove the element from the tuple. Okay, that's it from this lecture. Thanks for watching this video. Bye bye.